Good morning, children. 6th class, second language, Hindi, lesson 3. What is that? Oont chala. Oont means camel. Oont chala. So it has moved. Part 1. So you can see in this picture, camel. So in Hindi we say it as a oont. Oont chala. Chala means gone, moved. So oont chala. Where it moved, we see now. So it is a, in the Geet we say it. So in the rhyme, you listen it once. ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, बालू है तो धोने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला. So in this rhyme, they are going to say that oont chala, camel started moving. So how it's moving? Hilta dulta means its body when it moves, starts walking, then we can see that its complete neck start moving up and down. Have you seen any time that when camel moves? So if you observe, you can observe this, that its body, it starts moving up and down like this way, because the neck is so long and it will be like a curved. So in that way. इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला, इतना ऊंचा. So it is too high. That much height, ऊंट started moving. बालू है तो होने दो. बालू means sand. If sand is there, let it be. बोझ ऊंट को ढोने दो. बोझ means luggage or the load. Let the load to be carried by camel. Dhona. Dhona means carry. So let the load be carried by camel. ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला. ऊंची गर्दन means the neck is too high. ऊंची पीठ, even the back. What we say in Telugu, vipu. Even the back is also high. So with that high neck and the high back, it start moving. So this is the meaning of this poem. So once again we see the rhyme. ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, बालू है तो होने दो,
बोझ ऊंट को ढोने दो, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, भालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला. So in this way, this rhyme goes. Now we see the meanings of the word, each word. So what is the meanings we say in Hindi? Sabdarth. Sabdarth means meanings. Oont, camel. In Telugu we say onte. You need not to write the Telugu word, only the English word you see. Oont, camel. Chala, started. So it means in Telugu బయలుదేరెను. Bhai, brother, సోదరా. Hilta, moving, కదులుతూ. Dulta, dipping, అటు ఇటు ఊగుతూ. Itna, this much, ఇంత. Uncha, high, ఎత్తైన. Balu, balu means sand, iska. High, high means is. So, होने दो, let it be. అవనివ్వండి. तो होने दो, అయితే అయింది. బోజ్, లోడ్, బరువు. ధోనే దో, let it carry. మోయనివ్వండి. గర్దన్, నెక్, మెడ. టీత్, బ్యాక్, or we say behind or back part. వెనుక, వీపు భాగం. ఉఠాయే, లిఫ్ట్, ఎత్తి, ఇలా మోసి. మోసుకొని వెళ్తారు అంటాం కదా, ఆ టైప్. So in the sentences when we see meaning of that, you see here, ऊंट चला, ऊंट चल रहा है. Camel is moving, चल रहा है, moving. When we have this रहा है, it indicates in English as a ing form. चल रहा है, moving, is moving. Hai means is moving. रहा है is ing form. ऊंट चल रहा है. Camel is moving. This meaning it will come here while you will translate in English. Camel is moving. But in Hindi we have to write ऊंट चल रहा है. हिलता डुलता चल रहा है. कैसे चल रहा है? You question, when you will question here, कौन चल रहा है या कौन चला? ऊंट चला. कौन चल रहा है? ऊंट चल रहा है. हिलता डुलता चल रहा है. कैसे चल रहा है? हिलता डुलता चल रहा है. How it is moving? हिलता डुलता चल रहा है. बालू में भी चलता है. कहाँ चलता है? बालू में भी चलता है. Where it goes, where it can walk, where it can move. In the sand also. He means also. ऊंट का पीठ और गर्दन ऊंचा है. ऊंट का पीठ है. पीठ मीन्स बैक, वीपू. और गर्दन मीन्स नेक. ऊंचा है, इट इज सो हाई. ऊंट का पीठ और गर्दन ऊंचा है.
So first we see the sentence. ऊंट चल रहा है. Camel is moving. हिलता डुलता चल रहा है. It is a dipping and a moving. While it walking, dipping and moving. ఊగుతూ ఊగుతూ నడుస్తుంది. బాలు में भी चलता है. In the sand also it is moving. ऊंट का पीठ और गर्दन ऊंचा है. Camel's neck and back is high. So it is the sentences what we have seen. Now we go the questions. Homework questions. Answers I gave in the next slide. You see once. गृह कार्य means homework. एक या दो शब्दों में जवाब बोलो. In words you have to give the answer. One word or in 2 words. कौन चला? I ask you. कौन चला? Then who is moving? ऊंट. Camel चला. So instead of the cow, here you have to substitute ऊंट. Camel. कौन चला? ऊंट चला. ऊंट कैसे चला? ऊंट हिलता डुलता चला. Here 2 words. हिलता डुलता. How it is moving? Dipping and moving, no? So हिलता डुलता चला. ऊंट हिलता डुलता चला. So you have to take this कैसे word and you should substitute हिलता डुलता. ऊंट क्या ढोता है? ऊंट बालू ढोता है. या ऊंट बोझ ढोता है. What it is carrying? It's carrying the load. ऊंट क्या ढोता है? ऊंट बोझ ढोता है. ऊंट के गर्दन और पीठ कैसे हैं? Camel's neck and back, how it is? How is camel's neck and back? ऊंट के गर्दन और पीठ ऊंचा है. How it is? It is so high. ऊंट के गर्दन और पीठ ऊंचा है. It is high. So now in the next slide you see the questions. Question with answer. I have given that question with the answer. कौन चला? ऊंट चला. ऊंट कैसे चला? ऊंट हिलता डुलता चला. So कौन चला? Only कौन word we have taken and ऊंट we have substituted. ऊंट कैसे चला? We have taken out this कैसे and we have substituted हिलता डुलता. So first word and the last word are like that. Only the middle one word we have substituted with 2 words. हिलता डुलता. Third one, ऊंट क्या ढोता है? ऊंट बोझ ढोता है. So it's carrying what? It's carrying load. So ऊंट का गर्दन और पीठ कैसा है? How the neck and back? ऊंट का गर्दन और पीठ ऊंचा है. Very high. It is high. So these are the question answers and the meanings is given in this video. You have to write those meanings and these question answers. So next we go with another part of these exercises. So until then, we stop here. Thank you.